Welcomes you, and today in this class of science we will start studying about the chapter 8, that is wind storms and the cyclones. So what is the atmosphere? We all know that the earth's atmosphere is a thin layer of gases which surrounds the earth, and due to the pressure which is being exerted by this atmospheric layer over the earth, it provides us with a different kind of climatic conditions and the environments. As we are discussing about the extreme climatic conditions developed due to the storm, cyclones and tornadoes. So firstly we will discuss what is the atmosphere and what are the different layers of atmosphere which in which these climatic conditions prevail. Okay, so we know that these gases the layer of atmosphere protects our earth from the extreme temperatures, from the UV radiations coming from the sun. So we will discuss the different layers of the atmosphere. The different layers of the atmosphere mainly comprise of the four major layers. There are usually the five you study, but the main are the four layers. The four major layers are the troposphere. It is the closest to the ground, and the weather is present in this layer only. So the just above the earth or the land in which we live, the layer of the atmosphere which is present is called as the troposphere, and it is responsible for the weather conditions in our surrounding. Now above the troposphere there is present the stratosphere. You can see in the picture also that for about 14.5 to 50 kilometer of distance there is a stratosphere, and it is the layer of the earth which contains the ozone layer and protects us from the UV radiations. It is usually the calm zone, very beneficial for flying the aeroplanes. Then comes the mesosphere. Mesosphere is the layer present above the stratosphere between the 50 to 85 kilometers, and it burns the meteorites. Usually the meteorites which come from the universe into the earth, they usually burn in this layer. Then above the mesosphere there is present the thermosphere and the exosphere. These are the outermost layers of the earth, and which are next to the space. Usually the satellites are placed in these layers, and as we know that that earth's atmosphere is a layer of gases. It consists of 4 to 5 layers. Now we will discuss how this atmosphere affects the weather or the climatic conditions. As we know that air exerts the pressure. as air क्या करती है, pressure exert करती है ना, और इसके क्या examples हैं? There are so many examples of this, that where the air also exerts the pressure, and because the pressure being exerted by the air we observe the different climatic changes. क्योंकि अगर एयर का प्रेशर ना रहे तो हमारे अर्थ पे शायद क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ही स्टिल रहेंगी. सो वी ऑब्जर्व द जो डिफरेंट चेंजेस वी वोंट बी एबल टू ऑब्जर्व. सो फर्स्टली वी विल डिस्कस हाउ द एयर एक्सर्ट्स द प्रेशर, बिकॉज वी कांट सी इट एंड वी डोंट नो हाउ डज इट एक्सर्ट. सो usually when the tube of a bicycle is filled with air, usually the tire burst if the excess of air is filled in it. Okay, in the summer season you observe, if the excess of air is filled in the tube of your bicycle, then it usually bursts, because the air exerts the pressure on the tube, and that's why it bursts. And it is difficult to move the bicycle if you are moving it in the direction opposite to the wind. Usually you find it difficult, you have to add extra effort to move your bicycle, है ना. So it is just because the air or the wind also exerts the pressure, है ना. Then when a boiled water is filled in the tin can, and you cover its mouth, and then you pour the cold water over it. ठीक है, आपने टिन का एक कैन लिया, उसमें जो है पहले बॉइल्ड वाटर को फिल किया, उसका लिड कवर कर दिया, और अब उसके ऊपर से हमने क्या पोर किया, कोल्ड वाटर पोर किया. तो यूजुअली वो क्या कर देता है, उसके शेप को डिस्टॉर्टेड कर देता है, बिकॉज द स्टीम इनसाइड द कैन steam present in the form of air inside the can condenses and creates the low pressure. और लो प्रेशर होने की वजह से जो हाई प्रेशर बाहर होता है उसके शेप को क्या कर देता है, ख़राब कर देता है ना. सो देयर आर मैनी अदर एग्जांपल्स विच वी सी इन अवर डे टू डे लाइफ, लाइक एरोप्लेन कैन फ्लाई बिकॉज एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. एयर के प्रेशर की वजह से जो हमारा एरोप्लेन फ्लाई करता है. बर्ड्स फ्लाई बिकॉज द एयर एक्सर्ट्स द प्रेशर. यू नो दैट फ्लाइंग काइट इज़ ईजी व्हेन यू फ्लाई
when you fly it in the direction of the wind, in the opposite direction you usually find it very difficult to fly a kite, है ना। तो इसलिए जो है हमें इन सब एग्जाम्पल से क्लियर होता है कि जो हमारे आसपास का सराउंडिंग है, जो एटमॉस्फेयर है, वो क्या करता है, एयर जो है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करती है, और इसकी वजह से हम जो है बहुत सारे डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस को ऑब्जर्व करते हैं। सो व्हाट इज़ द मूवमेंट ऑफ एयर। सो क्या एयर कैसे मूव करती है, अभी तो हमने समझ लिया कि हाँ एयर प्रेशर को एक्सर्ट कर रही है, मूव कर रही है। हाउ डज इट मूव्स। सो एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम द हाई एयर प्रेशर कंडीशन टू द लो एयर प्रेशर कंडीशन है। वी हैव स्टडीड अबाउट दिस in the previous chapters. So thus as the greater will be the pressure in one area, the air will fastly move towards to the low pressure area. Okay, then how due to this pressure generated the winds are generated. Okay, ये जो pressure develop होता है और ये high pressure low pressure condition की वजह से क्या होता है, एयर का जो movement होता है वो wind के form में होता है ना। So what are the causes which are responsible for the movement of the wind। So तो प्रेशर डिफरेंस बिटवीन इन द एयर कॉजेज द डिफरेंशियल हीटिंग। डिफरेंशियल हीटिंग जो प्रेशर का डिफरेंस है वो यूजुअली कहाँ जनरेट होता है, जैसे इक्वेटोरियल रीजन्स हैं, तो इक्वेटोरियल रीजन्स में क्या होता है, वार्म एयर होती है। सो वार्म एयर इज यूजुअली बिकम्स लाइटर, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, वो लाइटर हो जाती है एंड रिट्राइजेस अपवर्ड्स। सो टू फिल दैट स्पेस द एयर फ्रॉम द कोल्डर रीजन्स का मूव टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल रीजन्स ऑफ द अर्थ। सो इन दिस वे द मूवमेंट ऑफ द एयर is from the colder region towards the equatorial region in order to fill the low air pressure condition, and this generates the winds in our surrounding। और यही किसको generate करता है, winds को generate कर देता है और winds का movement होता है। So how the movement of air is affected on the earth। There are the two main factors which affect the movement of the earth। The first one is the uneven heating on the earth। ठीक है, अनइवन हीटिंग अर्थ में दो फॉर्म्स में है, एक इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है, वी नो दैट द एक्सट्रीम सनलाइट इज बीइंग रिसीव्ड बाय द इक्वेटोरियल रीजन, सो दे गेट हीटेड अप फॉर होल ऑफ द ईयर, एंड वहाँ पे क्या होती है, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं, सनलाइट जो है मैक्सिमम रिसीव करते हैं और एयर क्या होती है, वार्म होती है। और हमेशा जो है कोल्डर रीजन्स और द अदर जोन्स ऑफ द अर्थ, वहाँ से क्या होती है, विंड्स ब्लो करती हैं टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल रीजन्स, ठीक है। एंड द सेकेंड one is the movement of air because of the uneven heating of land and water। We know that the land heats easily as compared to the water during the daytime, and it cools down easily as compared to the water during the night time, and this difference in the heating and cooling of the land and water also generates the winds, and we have studied it in the form of sea breeze and the land breeze। The sea breeze which develops during the day when the land is more heated, so the colder winds from the sea move towards the low pressure areas of the land, and in this way the sea breezes are developed during the daytime, and during the night time the land breezes are developed because land breezes क्या करती हैं, the earth gets cool down easily during the night than the water, so the cold winds from the land side move to fill the low pressure condition over the sea side, ठीक है। तो these are the two things which are usually responsible for the heating of the air। So this was all the concept about how the winds are developed, how the atmosphere of the earth exerts the pressure on the earth, and now we will move in the next video, we'll discuss about the storms and the cyclones, how they are developed and how do they affect our society। So I just will meet you again, till then thank you।